तो अगर किसी को पैसे बनाने AI के थ्रू कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हो? So messaging app, a billions of user base is a very good opportunity क्योंकि WhatsApp और Telegram अभी भी very human oriented with less AI. Tell me things that are incredibly fascinating around the world. There is one startup, they charge people after they die. What they say, okay, you died out of cancer, right? We will put you in a refrigerator. 100 साल बाद एक इनोवेशन हुआ जहाँ पर वो बीमारी सॉल्व हो सकती है. हम आपको निकाल के उस टाइम पे उससे फिक्स करके we will make you alive. AI कहाँ पे डिस्ट्रप्शन लेके आने वाला है? There is like a big market in robotics in China and even other places. I think where it's heading is a bit dangerous territory in terms of like extinction event of humans. Very high possibility. Do you feel एक टाइम बाद बहुत biased हो जाता है AI? There's always a biases, I think, in AI because it's trained on some data, and that every data will have some kind of biases. You can't have like a clean AI. What does a good prompt look like? So depends how better you are conveying it in your words. One thing that works best when you really ask AI to think hard, it does think hard. Like Really? go in depth, think hard, use these words. So if we use these words, it actually gives you better answers? Yeah, it gives better answer. मैं एक बिजनेस ओनर हूँ. मुझे 50,000 रुपए किसी इंसान से लेने एंड मुझे ये हर 24 आवर्स में मेरे फोन पे रिमाइंडर भेजे कि वो पैसे आ गए कि नहीं आ गए, ये चेक कर लो. AI यूज करके भिंडी AI पे जाके कर सकते हो अभी? हाँ, कर सकते हैं पूरा. Like, hey, so can you issue an invoice to Raj Shamani for receiving 50,000 rupees and scheduler every 9 p.m. if you haven't replied to the email? तो ये आ गया PDF एंड दिस इज माय इनवॉइस. तो मैं डायरेक्टली इनवॉइस बना सकता हूँ एंड मैं भेज सकता हूँ. On the fly. I'm just talking to you and I can on the fly dump the voice. You're talking about Elon. You love him? Yep. Elon क्यों जीतता है? His goals are very not normal. Going to Mars. ऐसे बड़े बड़े goal. If you are aiming for stars, you end up being on the moon. So I think that's a very big trait of him. In your journey of building products and actually attracting so many users, what makes people stick to products? आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं सौम्य जैन, फाउंडर ऑफ अपसर्ज लैब्स, भिंडी AI और को फाउंडर ऑफ इंस्टाडैप, जो AI के नेक्स्ट एवोल्यूशन को शेप कर रहे हैं. वो बताते हैं क्रिप्टो अब सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि फ्यूचर इकोनॉमी का फाउंडेशन बन चुका है अकॉर्डिंग टू हिम. वो मानते हैं कि बिटकॉइन अगले 5 सालों में और ज्यादा बढ़ेगा और क्यों बढ़ेगा, इसके बारे में बात की है. हम जानेंगे कैसे AI अब सिर्फ असिस्ट नहीं करेगा बल्कि काम एग्जीक्यूट करेगा, जैसे भिंडी AI जो सिर्फ मेल ड्राफ्ट नहीं करता बल्कि लिखकर भेज भी देता है. ये है AI वर्कफ्लोज का फ्यूचर, जहां एक सिस्टम ट्रैवल प्लान्स बना सकता है, काम ऑटोमेट कर सकता है और आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से हर वीक एक डेट भी फिक्स कर सकता है. If you're curious to see how AI can actually do things for you, check out the link in the description. If somebody is watching this today, okay, and उसको ये पूरी दुनिया AI की, टेक्नोलॉजी की, ये कुछ समझ नहीं आता. But AI has become a buzzword and now it's reality also. तो अगर किसी को पैसे बनाने AI के थ्रू कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हो, कहाँ पैसे बना सकता है? So all the software we are using today is going to go, उनका पूरा चेंज होने वाला है. Like अभी सब very manual, built for humans, the interfaces. So हर तरह के apps, even messaging app. I think messaging app is a very big opportunity क्योंकि WhatsApp और Telegram अभी भी very human oriented with less AI. So something we are also adding into Bhindi Backroom. So messaging app, a billions of user base is a very good opportunity. Productivity apps, you don't have to work. I don't know why after an AI people will work. People see it like कि सबकी job चली जाएगी, but I see it more positively. You really don't have to work. You can just have fun. Because क्या प्रोडक्टिविटी ऐप क्या बना सकते हो जिससे आपका ईमेल या मेरा ईमेल या फिर आपका कोई पर्सोना मेरे पर्सोना से सब बात कर रहा है, मुझे इन्वॉल्व भी होने की जरूरत नहीं है. The only thing we need to involve, like we are connecting right now, right? That's only thing as a human we need to do. Rest all of the things is already handled under the hood by some AI systems. Give me an example, like what? Give me use cases. 3-4 use cases दो कि एक प्रोडक्टिविटी ऐप कोई बना सकता है और वो ऐप अगर आज कोई बना दे और लोगों को डाउनलोड करा दे तो that person can make a lot of money. I think one of the biggest problem right now is context. Like आप ChatGPT के पास जाते हो तो आप उनको बोलते हो, उसको हर बार एक नया कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है.
कि ये हुआ है, बट एज अ ह्यूमन हम किसी दूसरे इंसान को पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं देते. हम सीधा बोलते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आई एम अबाउट टू हैव अ लॉस इन सम ऑफ माई फाइनेंशियल एसेट्स एट लेट्स से $2,000 एंड आई टॉक टू माई ब्रदर कि प्राइस $2,000 तक पहुंच गई है. सो he will not take it as like ki answer ki ha okay acknowledged. He will be like, oh shit. He will have some kind of emotions to attach to that same stuff, right? So AI में वो बहुत बड़ी problem है context. I think context building anyone can actually add it कि the AI can understand us more better. अभी मैं ChatGPT के पास जाके बोलता हूँ उसको कि ये करना है, अगर उसकी जगह ChatGPT come back at me, that would be a very big change. अभी I think कोई नहीं कर रहा. ChatGPT ने कल ही लॉन्च किया है Pulse. Like Pulse is like so आप जो भी बात कर रहे हैं ChatGPT पे, वो आपको अगले दिन एक समरी बनाकर आपको बता देगा. तो आपने अगर उसको बोला है कि मेरा एक दोस्त है उसके साथ मुझे मिलने जाना है, तो अगले दिन इट विल सजेस्ट यू सम प्लेसेस टू गो. सो नाउ दिस इज बहुत अच्छी डायरेक्शन है, क्योंकि ये ही दिस इज व्हाट लैकिंग इन द AI. हम जाके बोलते बट AI systems are not coming back at us. Now, this is a very good one. Like, they will talk to us and it reduces my workload more because I'm not even thinking to talk to AI now. They are coming back and actually solving my problem. Suggestive. So, instead of human to AI, it's AI to human. And I am just a confirmation, yes or no. So, that's one which you feel is incredible opportunity. Yeah, incredible. Productivity sort of app जो आपको अच्छे से समझे एंड आपका नेक्स्ट डे बेटर कैसे हो सकता है, आपको सोचना कम पड़े, वो खुद ही वो ऐप सजेस्ट करती जाए. दैट इज वन. Yeah, that is one opportunity right now. Very big opportunity. Okay. What's the second? Second opportunity, I mean, there is multiple industry and a lot of opportunity, but I will say if you can make work invisible, like आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़े, आप emails पे जाते हो, Slack पे जाते हो या कोई भी, all this thing needs to not be there. So because all these are very logical, very deterministic, AI should be able to handle it. All they need to know is my intent and they should just get the work done. So if there are 10 people I'm talking to, AI should know just this. These 2 people are very important. Just take care of them better, coordinate better, and सारा काम उनको करने दो. AI systems and उनके भी background में AI systems चलते रहेंगे. I mean, internet as a whole is gonna be zombie land. Because हम ये आज पता नहीं लगा पा रहे कि हम AI से बात कर रहे हैं. सो मैंने एक ट्विटर बॉट, मेरे अकाउंट में एक ट्विटर बॉट चला के डाला था. एक Obsidian founder. Obsidian is a very popular note making app. That founder was replying to the tweet done by my bot. And I read like, oh, that some guy in San Francisco who leads this project is replying to a bot. Yeah. And I was confused, like, okay, this is a very good example. Like, slowly, how do I believe I should need to coordinate with an AI? Why do I convince other person on internet? So the internet will just become a consumption layer. I will just go there to acquire information, but not to converse, because I don't know कि मैं AI से बात कर रहा हूँ या human से बात कर रहा हूँ. So it's and I had seen it first hand already 2 months back. आज तो मे बी और हो गया हो, और अगले 1 साल में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो फिर we are underestimating like how dramatically the world is changing. तो AI बात करते रहेंगे. बट इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है? इज देयर सम वे वेयर पीपल कैन डू इट, और देयर इज नो वे व्हिच यू कैन थिंक अबाउट? लोगों को खुद ही सोचना पड़ेगा. नहीं, पूरा इंटरनेट चेंज होने वाला है. सो आई थिंक एवरी ऐप दैट एग्जिस्ट विल हैव अ रीवैम्प. सो आप कोई भी ऐप उठाओ, उसको आप कैसे AI के थ्रू सिंप्लीफाई कर सकते हो एंड यूजर्स के लिए, एंड जस्ट चेंज इट, एंड इट्स गोना हैव वैल्यू. लाइक a lot of apps, we are just doing a lot of manual work which doesn't exist. And I think one more thing is like Naval tweeted this some months back, that the promise of AI is no interface. Like आपको जब interface नहीं use करना पड़े, that's when actually आपका AI system. So explain. So आपको अगर अभी, I mean, if you want to book a car, you go to Uber. If you want to order food, you go to Zomato. Or you want to book a flight, you go to Make My Trip. You don't need this division. You need a one system, which we call AI system or AI assistant or whatever we call it. Whatever. You call it something XYZ
in your phone there's one app called XYZ, Yeah. and then you just tell that to that app. उसको बोल दो and it will take care of everything. And let's go one more step ahead. It doesn't even, I think mobile will change it itself. So आपने अगर देखा अभी नया एप्पल का डिजाइन, everything is concentrated at the top of the, तो आईफोन का पूरा उन्होंने जो नया बनाया है, everything is concentrated in top layer. They are moving towards a miniature version of devices. You will not need like a big phone. Everything is concentrated here, could be attached to here, could be anything, I don't know. So it will not even me using a phone, it just stays with me and figuring out things around me. Yeah, that Jio launched that glasses. You saw. Yeah, glasses are a very good example. Like I'm fascinated. Meta glasses, Jio glasses, all Yeah. of that they've launched. Yeah, they haven't gotten to that stage yet that I will use on a day-to-day basis, but it have a real chance of disruption. Yeah. But usme at least they're using. I saw this video recently where they're saying कि आप फोन उठा सकते हो, फोन काट सकते हो, गाने सुन सकते हो, डायरेक्शंस देख सकते हो, आप डायरेक्टली चलते फिरते एक लोकेशन देख सकते हो एंड उससे पूछ सकते हो कि अच्छा ये कौन सी बिल्डिंग है, एंड दैट विल गिव यू हिस्ट्री ऑफ इट. सो यू कैन यूज इट एज योर, लेट्स से, in your assistant full time. Totally. Yeah, I just tried it 1 week back, the newest Meta glasses, and it doesn't even have a voice. It actually transfer आप जो सुनते हो कान में वो डायरेक्टली बोन को वाइब्रेट करता है. वॉइस निकल भी नहीं रही है, तो आप मेरे पास आओगे आपको सुना नहीं देगा, बट वो वाइब्रेट करके इस पार्ट से आपको पूरा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है. सो आई एम सीइंग लाइक ऑल दिस थिंग्स कमिंग आउट लाइक, so we're dramatically underestimating where we are heading. I think it's going to be a very cyborg kind of world. And it's going to happen. It's going to happen. If we don't do it, someone else will do it. So why not us? So there, okay. Again, we're back to the same question. मैं कैसे opportunity ढूंढूं इसमें? I think the next good opportunity could be robots. What do you mean by that? For example, what if this is powered by some AI system? I'm moving here. और वो अपने आप आ जाए. Yeah, it comes to me immediately. But it's not only about that. If I just went down to, let's say, फीते बांधने के लिए मैं नीचे झुका, it should not come to me. Now, if it's just a deterministic program, it will do that too. But it needs to have some kind of consciousness inside it. Some kind of intelligence. Yeah, some kind of intelligence, and possible. So it will move around with me. This is just one example, maybe a lamp, Pixar kind of lamp sitting around me. So, and these are a very good one because this is a good opportunity. I personally want to enter into this, but it's a very high turnaround. You can't just move things around so fast. Robotics, right? But if किसी के पास dedicated time है, I will suggest to get into the intersection of robotics and AI. Because that's when the real change will happen for us. Software में इतना change नहीं दिखेगा, but when all of the things around us are having some consciousness via this artificial intelligence, they are moving around. And आपको लग रहा है ये कैमरा move around कर रहा है, they are kind of coordinating with you in some lights. Yeah. By the way, हमारे पास एक लैम्पी प्रोजेक्ट हमने in-house बनाया है. We also have a robotic team in like Bangalore. The lamp actually reacts to you. You say it like, hey, I had an accident yesterday, and it will get depressed. It will show emotion via just eyes. You try to be angry, it will get angry too. It have ears moving like this, like a bat, you know. So this these are some examples like how world around us is going to change. Software से हमें इतना physically दिखेगा नहीं, but I think when it comes to the physical form, that's when we will feel it a lot. True. So that's one. Or examples. I like this example. Okay. Give me more examples like this. Intersection of Robotics and AI. Yeah, this is one, but intersection of bio and AI. Explain. Basically bioengineering your body. So What do you mean by that? So एक tech already CRISPR करके tech है, you can change genes in you. So आपको जैसे you want to change the color of your eyes. Maybe, I don't know if it's possible when you're an adult, but when you're a kid, you can change the color of eyes. This is one like very real use cases. And it's technically possible. If someone is disease ridden, like let's say high chances they have some genes which can cause cancer. Now you can edit those genes via this CRISPR tech. And AI is actually advancing it. Recently I read about it, like, so AI has created its own sequence of genomic sequence. It's complicated, but okay, in simple terms, उसने अपनी खुद की एक species बना दी. So हम as a species also evolved like monkeys, apes,
and then a human. There's a like a evolution that happened, right? AI ने एक नया species बनाया है with a whole sequence of genes, and now this opens up a lot of like you kind of creating a new species, right? You know, so I mean the positive and negatives are many, but very big field, because जब AI आपका हर aspect of your life is automated by AI digitally, physically, then the only thing that left is how you maintain your body. And it also linked to longevity now, like how you can live longer by fixing, because dying is not natural. You die because one of your organs stop working, like in most cases. If it's not sudden death, you die because your one organs failed and other organs like follow the route, right? Now if you find a system, bioengineering your system, where you can let that organ sustain well, basically you can't die anywhere. So again, many people are prediction that the person who is going to live 5,000 years is already born. I don't know, I mean maybe we will not live long enough to see that. But it's a very bold prediction, right? There is one startup which is very funny, like they charge people after they die. What they say, okay, you died out of some, let's say cancer, right? We will put you in a refrigerator, ठंडा करके आपको रख दिया, आपके cells will not deplete now. 100 साल बाद एक इनोवेशन हुआ जहां पर वो बीमारी सॉल्व हो सकती है, कैंसर या कुछ भी. नाउ हम आपको निकाल के उस टाइम पे उससे फिक्स करके, मतलब उससे जो भी बायो इंजीनियरिंग करके वी विल मेक यू अलाइव. एंड आई वेंट टू दिस event in Dubai. Even Brian Johnson came to that. This was a Nas Daily event, and there was this startup pitching, and I found like this is such a, I don't know, it's a very good money making process. Like you are selling after you die. It doesn't matter, right? You don't need money now. Like you're gonna die, you don't need money. Why not just pay them and put me in a rental cube? Yeah, and just so. There's that's a lot tech. Yeah, that's tech. I mean, that's crazy. Tech startups. That's very wow. weird. What are the more okay? Let's do this. Tell me 2 or 3 more things that is incredibly fascinating around the world. जो आपने सुनी हो and you have seen कि लोग ऐसे startups पे काम कर रहे हैं कि दुनिया में ये चल रहा है. Like death tech is very. I've never heard of this. I'm hearing it for the first time. I mean, ऐसे तो बहुत crazy startups है. Can't immediately think maybe it will come into the conversation. Okay. Yeah. All right. So we'll build. Yeah. Okay. Because you're talking about AI and आप बात कर रहे हो AI will replace a lot of things. इंसानों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Right? Let's figure out कि हम भिंडी AI से, that's your startup, उससे क्या बना सकते हैं जो लोगों को day to day life में help करे और उनको काम कम करना पड़े. Can we do that? Yeah, we can totally do that. I mean, our motto is to like make work invisible. Lovely. करता क्या भिंडी है? मेरे को सिंपल लैंग्वेज में बताओ. What does your startup do? आप अभी ChatGPT पे जाकर उसको कुछ prompt करते हो and it will respond you in some kind of text. It will not do that for you. What Bhindi do is it execute that for you. So for example, आप ChatGPT पे गए, hey, can you draft me an email? It will draft you an email and then you will copy, paste it in Gmail and send it. What happens on Bhindi, you ask it to do it, it will actually send the email via your Gmail account. मैं सिर्फ भिंडी में बोलूँ वो सब खुद ही करेगा. खुद करेगा. आपको prompt करना है, आपका prompting skills needs to be good because AI doesn't understand you well. So आप कुछ आपने एक line बोल दिया तो कर दिया. It will not, the outcomes will be not right, but it will do it. So Gmail एक हुआ, but it could be anything. कि can you get the price of, I don't know, HDFC Bank and send that price to my broker and then ask him what could be the, and then have a check whenever he respond you back after 2 hours, remind me back. Now it's a chaining of multiple actions. It will first go to Perplexity or Google to get the price, then ask your broker, should I buy or not, and then set a reminder after 2 hours. I need to check if that your investment person has like gotten back at you or not. And when it get back and you're gonna, so these are the workflows which are not possible in tech. With Bhindi you can do all this. It actually execute on your behalf. Okay, so let's make use cases by use cases. Okay. I love this. I'm gonna make sure that by the end of this podcast लोगों के पास 10-12 use cases हों जो अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं. Right? One of the first use cases, let's see, अगर कोई ये podcast देख रहा है, क्योंकि इंडिया में ट्रैवल बहुत बढ़ रहा है. हाँ. Right?
वो AI यूज करके बिंडी AI पे जाके अपने ट्रैवल एजेंट को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं ये बताओ। ओके, क्या मैं प्रॉम्प्ट डालूं ताकि मैं उस पे जाके ट्रैवल एजेंट को रिप्लेस कर दूं? हाउ, व्हाट इज माय, आई एम गिविंग अ प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम इज, आज मुझे ये प्लान करना है कि मैं दिवाली की छुट्टी पे घर वालों के साथ 4 लोगों के साथ छुट्टी पे जाना चाहता हूँ। मेरा बजट है मान लो 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में मैं जानना चाहता हूँ कि मैं इंडिया में जा सकता हूँ कि बाहर जा सकता हूँ। फिर मैं इंडिया में कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, बाहर कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। उसके बाद जब भी अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो मैं दुबई ट्रिप पे जाऊँगा, तो दुबई जाने का चीपेस्ट फ्लाइट कौन सी है, चीपेस्ट फ्लाइट के बाद वहाँ पे अच्छा स्टे कौन सा है, अच्छा स्टे का चीपेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। इतने सारे जैसे मेक माई ट्रिप, यात्रा, क्लियर ट्रिप, ईज माई ट्रिप, इन सबसे मैं कौन से प्लेटफॉर्म से सबसे सस्ती प्राइस निकल जाए मुझे, उससे मैं अपना सबसे सस्ता होटल बुक कर लूँ, वहाँ की मेरी टैक्सीज बुक हो जाए, मेरा वीज़ा सॉर्ट हो जाए एंड मैं वहाँ से आने की रिटर्न फ्लाइट भी हो जाए। एंड टू एंड मेरा पूरा एक ट्रैवल आइटनरी, ट्रैवल बुकिंग्स बन जाए और इंटरनेट पे सबसे सस्ती अच्छी प्राइस पे बन जाए। एंड अगर इंटरनेट पे कोई कूपन्स और पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली हो तो उसको अप्लाई कर कोई कूपन्स मिल जाए, कोई स्पेसिफिक ऐसे वाउचर्स हैं, कोई मिल जाए मुझे इंटरनेट पे ढूंढ के, ताकि मैं थोड़ा अप्लाई करके और 10-15% कर लूँ। एंड कौन से कार्ड से, कौन से क्रेडिट कार्ड से, कौन से पेमेंट मेथड से मैं करूँ वो भी हो जाए। हाँ, नहीं इसमें ऑल ऑफ दिस एंड टू एंड, हाउ कैन आई मेक अ वर्क फ्लो और अ ट्रैवल एजेंट टाइप का फ्लो ऑन विंडी? या इट्स मोस्टली वर्ड्स। बेसिकली आप उससे सिर्फ शब्दों में बात करोगे, लाइक यू आर एडिंग वर्ड्स टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस, एज डिस्क्रिप्टिव एज पॉसिबल। हाँ, तो वो इन्फॉर्मेशन ले लेगा सब कुछ, और एक हमारे अभी जो भी एजेंट्स है फ्लाइट के, या फिर गूगल सर्च या परप्लेक्सिटी सर्च, उससे वो पता भी लगा लेगा। इनफैक्ट इट कैन ऑल्सो मूव अहेड एंड गिव यू एन आइटिनरी व्हेन यू गो देयर, आप कौन कौन से जगह जा सकते हो, कैफे जा सकते हो, जो भी है। इट विल प्लान आउट ऑल बेस्ड ऑन योर प्रॉम्प्ट, हाउ वेल यू आर डिफाइनिंग इट। आई मीन इनपुट्स आर सो बेटर, लाइक आपने क्या क्या स्टार्टिंग में बोला है। द ओनली प्लेस इट, I think the current AI systems in general fails is the financial transaction, because the platforms doesn't open up their APIs to make the payments. That's also solving, but I think majority of the problem, it will actually build it. The real key here is how better you can talk to AI, how descriptive you are when you talk. How do we do that? Let's say Bindia, can we get a laptop and do it? Yeah, I mean, it's similar UX wise, it's similar like ChatGPT. Can we open it right now and write a prompt? मैंने जो आपको बोला वो prompt में लिख के कर सकते हो अभी? हाँ, कर सकते हैं पूरा। Like, should we do it? Yeah, we can. It'll be incredible. People will love it. Yeah. Okay. Can you give me my expert book? बताओ. So I want to plan a travel. Let's start with some work first. Okay. You want to start with some work? Yeah. Tell me what you want to do. Okay. Let's say मैं एक ऐसा बताना, मैं एक entrepreneur हूँ और मेरे पास रोज सुबह हजारों ईमेल आते हैं। मुझे ईमेल्स, अब रोज वो ईमेल में से कौन सा रेलेवेंट है, कौन सा इररेलेवेंट है, कौन सा मैं सालों पहले डाल चुका हूँ, मुझे नहीं पता। तो आधे तो मेरे स्पैम है, आधे मेरे काम के, और आधे मेरे काम के ऐसे हैं जिसमें मुझे इंस्टेंट रिप्लाई करना है, और आधे ऐसे हैं जो नहीं करना अभी रिप्लाई, वो प्रॉब्लली मेरी टीम रिप्लाई कर लेगी। तो मैं सबको सॉर्ट कैसे करूँ एवरी मॉर्निंग, सो दैट 5 मिनट में मेरा काम हो जाए, मुझे आधा घंटा 1 घंटा रोज ईमेल पे